प्रोग्राम किया था जुडिशल रिव्यू के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जुडिशल रिव्यू में क्या होता है, जुडिशल रिव्यू ख़ुद क्या चीज़ है और ये कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुडिशल रिव्यू का जो प्रोसेस है वो क्या है। जुडिशल रिव्यू क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। जुडिशल रिव्यू शुरू किस तरह किया जाता है, आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊंगी। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जुडिशल रिव्यू जो है उस वक्त आपको करने की ज़रूरत पड़ती है जबकि आपके पास कोई अपील राइट नहीं होता। कोई एप्लीकेशन दें और अपील राइट अगर नहीं है, अगर आपके पास अपील राइट है तो फिर आप जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते, फिर आपको अपील्स एग्जॉस्ट करनी पड़ती हैं। उन्हें एग्जॉस्ट करने के बाद ही आपके पास अगर कोई राइट बने तो बने, लेकिन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जुडिशल रिव्यू का राइट सिर्फ उन एप्लीकेशंस में होता है जहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं होता। तो जुडिशल रिव्यू प्रोसेस के बारे में सबसे पहले आपको एक लेटर भेजना पड़ता है जिसे हम पैप कहते हैं, PAP, द प्री एक्शन प्रोटोकॉल। जो भी होम ऑफिस की किसी डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है उनको पहले ये लेटर भेजना होता है। लेटर को सारे पॉइंट्स डिटेल करने चाहिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ what it actually says. Normally, a person who wishes to challenge a decision of the Home Office should write first to the department asking for the decision to be reviewed. This is called the pre-action protocol. Page 29 of the GLD document provides useful information on the PAP stage. लिहाजा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इंटरनेट से मिल सकती है। अगर आप इस प्रोग्राम के बाद खुद रिसर्च करना चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं। Pre-action protocol letters and the responses to them should be carefully considered. This is a good opportunity to prevent judicial review proceedings being brought at all, either by remaking the decision in the applicant's favor where appropriate, or by setting out clearly the reasons for maintaining the existing decision. If the pre-action protocol does not prevent a judicial review, the litigation caseworkers should ensure that the government legal department are aware of any responses which need to be referred to in their response to the judicial review, known as the acknowledgement of service. सबसे पहला स्टेज है एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेज के होम ऑफिस के साथ एक तरह से ख़तों के ज़रिए निगोशिएट करना, बजाय इसके कि आप सीधे अदालत के अंदर पहुंच जाएं। उसके बाद अगर होम ऑफिस के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पाती, वो रिकन्सिडर नहीं करते या ये रिफ्यूज़ल बरकरार रखते हैं और आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तो फिर आप पेपर परमिशन स्टेज तक जा सकते हैं। If a person wants a judicial review of a decision, they must first apply to the upper tribunal or high court for permission. This should be done as soon as possible, but no longer than 3 months from the date of the decision, although the courts can decide to accept applications after that time limit. The person who brings a claim for the judicial review is known as the claimant or applicant in the upper tribunal, and the person against whom the judicial review is brought is the defendant or the respondent in the upper tribunal. Normally, the Secretary of State for the Home Department, SSHD in short, but it can also be an immigration officer or entry clearance officer where their decision is being challenged. The claimant sets out the grounds of their claim and includes any evidence they wish to rely on and asks for permission to be granted. Once received by the upper tribunal or high court, the application is sealed by the court. This means that the court stamps the application to show that it has been received. The papers must then be served on the GLD, which is the government legal department, who will in turn notify the Home Office in cases progressing through the High Court or directly on the Home Office in upper tribunal cases. The upper tribunal rules do not formally require service of the sealed claim form, although letters issued by the upper tribunal do inform applicants that they must do this. Once the grounds have been served on the government legal department or the Home Office, there are 21 days to file a paper response to the claim. This is known as an acknowledgement of service. The acknowledgement of service allows the Home Office to confirm whether it accepts the claim detailed in the judicial review
or whether they wish to contest the claim. If they contest the claim, the acknowledgement of service will include the summary grounds of defense and any evidence the Home Office wishes to rely on as to why the claim should not be granted permission to proceed. Once the court receives these judgments, a single judge will look at the papers and decide whether or not to grant permission. The test for granting permission is whether the judge thinks the claim is arguable. This is a low threshold. However, a significant majority of claims which are not settled pre-permission are refused permission to proceed. If the judge does not think the claim is arguable, the judicial review will be refused permission to proceed. Both parties are then notified of this decision by means of a court order. If permission is refused, the judge may certify the claim as being totally without merit. This is added where the judge considers the claim is completely hopeless. A totally without merit finding stops the claimant from renewing their judicial review to an oral permission hearing, but they may appeal this decision to the Court of Appeal. If the judge does consider the claim to be arguable, he or she will grant permission. In this circumstance, the case will proceed to a full substantive hearing. In either case, both parties are notified of the judge's decision by means of a court order. मैंने आपको अंग्रेज़ी में ये पूरा समझा दिया है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी उर्दू हिंदी में समरी देती हूँ। जुडिशल रिव्यू की जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले वो या तो अपर ट्राइब्यूनल में, जो कि आजकल एक आम सी बात है, ज़्यादातर अपर ट्राइब्यूनल सुन रहा है जुडिशल रिव्यू, या फिर हाई कोर्ट में जाती है। इमिग्रेशन केसेस की मोस्टली अपर ट्राइब्यूनल में जा रही है। दिस शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, यानी जैसे ही आपको होम ऑफिस का डिसीजन मिलता है उसके 3 महीने बल्कि 90 डेज़ के अंदर अंदर उस डिसीजन को आपको जुडिशल रिव्यू के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जो भी जुडिशल रिव्यू शुरू करता है उनको आम तौर पे हाई कोर्ट में क्लेमेंट कहते हैं और अपर ट्राइब्यूनल में उनको एप्लीकेंट कहते हैं। और जो आम तौर पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो हर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं या आजकल होती हैं, उनको आम तौर पे या तो डिफेंडेंट कहा जाता है हाई कोर्ट में या फिर रिस्पोंडेंट कहा जाता है अपर ट्राइब्यूनल में। जो क्लेम इशू होता है सबसे पहले, जो पेपर परमिशन के लिए इशू होता है, उस क्लेम में ग्राउंड्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और कोई एविडेंस अगर जिस पे रिलाई कर रही हैं पार्टीज़, वो अटैच्ड होता है उस सब के साथ। जब ये पूरा बंडल अपर ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट रिसीव कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जुडिशल रिव्यू का जो क्लेम है वो आम तौर पे गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर उनके ट्रेंड लॉयर्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो इसके साथ डील करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट को आपका जुडिशल रिव्यू का क्लेम फॉर्म और उसके साथ ग्राउंड्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, 21 दिन के अंदर अंदर उनको इसको फॉर्मली एक्नॉलेज करना होता है कि आपका हमें इशू मिल गया है, आपका जुडिशल रिव्यू मिल गया है और ये हमारी रिस्पांस है, जिसे आमतौर पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस भी कहते हैं और इसके साथ साथ ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस भी होते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स होती हैं और ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस जो हैं वो आपके क्लेम का एक तरह से जवाब होते हैं। अगर आप ये कह रहे होते हैं आप इंटाइटल्ड हैं, तो ग्राउंड्स कह रहे होते हैं आप इंटाइटल्ड नहीं हैं और इसकी वजह है ये वाली एक्ट या ये वाला इमिग्रेशन रूल या ये वाला EU रेगुलेशन। और अगर होम ऑफिस के पास कोई एविडेंस है या कोई केस है तो होम ऑफिस उस पर रिलाई करता है और वो उनके समरी ग्राउंड ऑफ डिफेंस में शामिल होता है। जब ये दोनों साइड का केस इकट्ठा हो जाता है तो एक जज बैठकर इन सारे पेपर्स को स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि इस केस में परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं। यानी पहले वो आपका केस पढ़ता है जुडिशल रिव्यू का, आपके ग्राउंड्स पढ़ता है, फिर वो होम ऑफिस का रिस्पॉन्स पढ़ता है और डिसाइड करता है कि यहाँ पे एक आर्ग्यूएबल इशू है या नहीं है। जनरली ये होता है कि ये जो पेपर परमिशन है, जिसका पेपर परमिशन में होता ही ये है कि जज बैठकर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे देख रहा होता है। पेपर स्टेज है क्योंकि पेपर्स पे आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पेपर्स हैं, होम ऑफिस के पेपर्स हैं जज के सामने। उस पॉइंट पे आमतौर पे केस रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही तरह से समझाई नहीं जा सकती।
کبھی کبھی بہت اسٹرانگ کیس ہو تو کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ایز اے جنرل رول میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ریفیوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو دونوں پارٹیز جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں یا کلیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اور جو رسپونڈنٹ ڈیفینڈنٹ ہیں وہ بھی, ان دونوں کو ایک کورٹ آرڈر کے ذریعے ڈیسیجن بھیجی جاتی ہے. اور کورٹ آرڈر میں عام طور پہ ججز یہ لکھتے ہیں کہ دیر از نو پوائنٹ ان دس دیٹ کین بی آرگیبل. اور پھر وہ اگر بہت ہی فضول قسم کا کیس ہوتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لائر صرف ٹائم کے لیے یہ اپلیکیشنز دے دیتے ہیں جبکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ ایکچولی میرٹس نہیں ہیں. تو اس قسم کے جب بہت سارے کیسز ہائی کورٹ میں گئے تو اس کے بعد ایک ڈیسیجن ایسی آئی تھی جس میں ججز نے یہ کہا کہ اگر لائرز ایسے وداؤٹ میرٹ کیسز ڈالیں گے تو ہم لائرز کو پینلائز کریں گے, تاکہ یہ روکا جا سکے کہ کسی بھی طرح کے کیس میں جوڈیشل ریویو شروع نہ کیا جائے, صرف جو ڈیزرونگ کیسز ہیں ان میں شروع کیا جائے. تو اگر آپ کے جوڈیشل ریویو کے کیس پہ کسی جج نے یہ لکھ دیا ہے ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ, تو آپ کو بہت اچھی لیگل ایڈوائس لینی چاہیے, بلکہ اپنے پیپرز پہ کسی بیرسٹر سے اپینین لینا چاہیے کہ اس کے اپینین میں آپ کا کیس واقعی وداؤٹ میرٹ ہے یا نہیں. ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں جن میں ججز ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ لکھ دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے پیپرز پراپرلی اسٹڈی کریں, وٹنسز کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وداؤٹ میرٹ نہیں ہے, ایکچولی ان میں بہت میرٹ ہے. ان کے فیکٹس اور ان کا لا ہی کسی نے اب تک ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا کیس جو ہے اسے کسی اچھے بیرسٹر سے پریپیئر کرائیں اور کسی اچھے وکیل کے تھرو آپ ڈیل کریں. اور جو وکیل بیرسٹرز کو امپلائی کر سکتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہر طرح کے لیگل ایڈوائزرز جو امیگریشن فیلڈ میں ہیں وہ بیرسٹرز کو ہائر نہیں کر سکتے, اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے. اگر ٹوٹلی وداؤٹ میرٹ فائنڈنگ ہے تو پھر اس کو آگے لے کر جانا بہت مشکل ہے. صرف اور صرف کورٹ آف اپیل ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس کیس میں آگے جایا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر جج کو یہ لگتا ہے کہ کیس آگیبل ہے تو پرمیشن دے دیتے ہیں, لیکن اگر وہ پرمیشن نہیں دیتے تو اس کے بعد آپ ایک اورل پرمیشن سٹیج پہ چلے جاتے ہیں, اور یہ کچھ اس طرح ہوتی ہے. In some cases, the judge will not be able to reach a decision on whether permission should be granted on the basis of the paper documents before him. In these circumstances, an oral permission hearing will be ordered. So, کبھی کبھی ججز کو یہ لگتا ہے کہ خالی پیپرز پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ خود آرڈر کرتے ہیں ایک اورل پرمیشن ہیئرنگ. اگر پرمیشن پیپرز پہ ریفیوز ہو جائے تو کلیمنٹس کے پاس 7 سے لے کے 9 دن تک ہوتے ہیں جس میں وہ رینیو کر سکتے ہیں اپلیکیشن. If permission is refused on the papers, a claimant has 7 days plus 2 working days for postage and 9 days in the upper tribunal in which they can renew the application to an oral permission hearing. This time period can be abridged to a shorter period if the application is deemed urgent. If so, this will be stated on the order refusing permission on the papers. So, کم بھی پیریڈ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اپلیکیشن دینی ہے آگے کی, اور کم بھی ہو سکتا ہے. جو آپ کا آرڈر کورٹ سے آتا ہے اس کو آپ کو بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس آرڈر پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. At an oral permission hearing, the claimant normally via their legal representatives before a single judge will explain why they should be granted permission, and the Home Office will be given an opportunity to explain why permission should not be granted. The Home Office will instruct a barrister to argue why permission should be refused. The upper tribunal or high court will then decide whether permission should be granted. A claim that is certified as being totally without merit cannot renew to an oral permission hearing. اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں گی, اس کے بعد پھر ہم کالرز کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ملاقات ہوتی ہے کچھ تھوڑی دیر کے بعد. دیکھتے رہیے وینس ٹی وی.